Welcome to this afternoon's diabetes overview. We'll be offering today's session in both English and Urdu and are so pleased that you could be with us today. I'm very grateful to be joined by Shabnam Jabrani, who is a certified diabetes educator practicing in the Greater Toronto area. And she'll be able to answer questions that you may have about what diabetes is, what some of the risk factors are, and what we can all do to minimize our risk of developing diabetes or to live well for those of us who are already living with it. So we'll be recording today's webinar and we'll be sharing that on Diabetes Canada's YouTube channel in the next couple of days. So you can review and refer back to any of Shabnam's comments or share this with any of your friends or colleagues that you may wish to share it with. So we'll also be really happy to take any of your questions during this period. If you're joining us on Zoom, you can use the Q&A function to send in your questions. And if you're joining us on Facebook, please use the comments function to let us know what you'd like to hear more about. Without further ado, Shabnam, welcome. Thank you so much for being with us. Can you start, please, by telling us, diabetes is a serious disease, but really how many Canadians are affected? Thank you, Kim, for inviting me to do this presentation today. About 11 million Canadians currently have diabetes or prediabetes. This represents more than 1 in 4 Canadians. Of the 11 million, over 4.2 million are living with prediabetes and over 6 million are at risk of developing diabetes. Every 3 minutes, a Canadian is diagnosed with diabetes. By 2025, 13.6 million Canadians will have either diabetes or prediabetes if we do not take steps to prevent and slow its onset. From these numbers, you can see why it is important to learn about diabetes so we can prevent its onset and serious complications. फिलहाल 11 मिलियन Canadians को diabetes या prediabetes है, यानी कि हर 4 में से 1 Canadian को diabetes है. इन 11 मिलियन में से 4.2 मिलियन को डायबिटीज है और 6 मिलियन को डायबिटीज होने का खतरा है. हर 3 मिनट पर एक कनेडियन को डायबिटीज की तशखीस होती है. अगर हम डायबिटीज को रोकने और उसके आगाज को सुस्त करने के इकदाम नहीं करेंगे तो सन 2025 तक 13.6 मिलियन यानी 13.6 मिलियन कनेडियंस को डायबिटीज या प्री डायबिटीज होगी. इन नंबरों से आप देख सकते हैं कि डायबिटीज के बारे में जानना क्यों जरूरी है ताकि हम इसका आगाज और उसके साथ जुड़ी संगीन पेचीदगियों को रोक सकें. Great, thank you for that, Shabnam. So before we dive in and hear more from you, I thought we'd just test our viewers by offering a bit of a true or false contest. So we'll go to the next slide here. And so follow along on which of these questions is true or false. Eating too much sugar causes diabetes. Insulin is a cure for diabetes. Diabetes is a serious disease like cancer or heart disease. And there are 2 types of diabetes. So indicate which ones you think are true, and there might be more than one. So diving right into the answers, it is not true that eating too much sugar can cause diabetes. We certainly know that having a healthy, balanced diet can help to minimize our risk of developing type 2 diabetes, or at least delay it, but no one causes themselves diabetes by eating too much sugar. That's a myth. Insulin, although it's an incredibly valuable and life-saving treatment, for diabetes is not a cure. Those of us that require insulin still very much have diabetes. Diabetes is most definitely a serious disease like cancer or heart disease. And Shabnam will talk to you in a few moments about some of the complications of diabetes and what it might mean for those living with it. So it's really something that we all need to take action about at the individual level to minimize our risk and at the societal level to help minimize the risk to everyone of developing diabetes. And finally,
There are more than two types of diabetes, so this question is false. We most commonly think about two main types, but as Shabnam will tell you in a few moments, there are more. So let's dive in. Shabnam, what is diabetes and what's happening in the body of a person with diabetes when they develop it? Kim, in our body, we get our energy by converting carbohydrates into glucose or sugar. We get carbohydrates from eating foods like bread, pasta, potatoes, milk, fruits, and vegetables. To use this glucose for energy, the body needs insulin. Insulin is like a key that lets glucose from the bloodstream enter the parts of the body that need it for energy. Insulin is a hormone made by your pancreas, and in someone with diabetes, the process of producing and or using insulin is impaired. हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज या चीनी में तब्दील करके इनमें से ताकत हासिल करता है। हम ब्रेड, पास्ता, आलू, दूध, फल और सब्जियां खाने से कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं। तवानाई के लिए इस ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए इंसुलिन जरूरी है। इंसुलिन वो चाबी है जो ग्लूकोज को हमारे खून में जिस्म के उस भाग में घुसने में मदद करती है कि जहां उसकी जरूरत है। इंसुलिन आपके लुबाल्बा में बनाए गए एक हार्मोन है। डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन की पैदावार और इस्तेमाल मुतासिर होती है। In a person who has diabetes, their body makes no insulin, just like in type 1 diabetics. Their body makes too little insulin. In some people, their body makes too little insulin or doesn't properly use the insulin it makes, as in type 2 diabetes. If there is not enough insulin or the insulin is not working well, blood glucose levels, also known as blood sugar levels, become too high because instead of going where it is needed for energy, the glucose sits in the blood. High blood glucose levels may make a person feel very tired, thirsty, and or need to urinate a lot. A person may also lose a lot of weight very, very quickly, have trouble seeing well, and or have infections more often. Over time, high glucose levels can damage blood vessels and lead to serious or deadly complications. Shabnam, did you wish to repeat that in Urdu? Yes, I will. I'm just trying to, okay. So, जिनको टाइप 1 यानी कि पहले किस्म की डायबिटीज होती है, उनके जिस्म में कोई इंसुलिन नहीं बनता, और जिनको दूसरे किस्म की डायबिटीज होती है यानी कि टाइप 2 डायबिटीज, उनका जिस्म बहुत कम इंसुलिन बनाता है या इंसुलिन का इस्तेमाल ठीक से नहीं करता, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो इसलिए क्योंकि हम वो शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हाई ब्लड शुगर की वजह से डायबिटीज के मरीज थकान महसूस करते हैं और उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है और बहुत पेशाब करने की ज़रूरत महसूस होती है। डायबिटीज के मरीजों में वज़न भी तेज़ी से घटता है, नज़र आना कम हो जाता है और इन्फेक्शन में इजाफा के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वक्त गुजरने पे हाई ब्लड शुगर से हमारी खून की नसों को नुकसान पहुंचता है, जिससे संजीदा और जानलेवा पेचीदगियां हो सकती है। So, Shabnam, we mentioned a few moments ago that there's more than two types of diabetes. Can you tell us more about what the different types are? Certainly. So first of all, most people are aware that there is type 1 diabetes. This kind of diabetes is caused when the body can no longer make its own insulin. About 10% of people with type 1 diabetes, with diabetes have the type 1 type of diabetes. It's diagnosed most often in children and young adults. People with type 1 must inject insulin every day. This can be done in several different ways, either through using needles, insulin pens, or with an insulin pump.
Type 1 diabetes cannot be prevented and currently there is no cure. It can, however, be managed with healthy eating, exercise, blood glucose testing and daily insulin injections. पहले किस्म की डायबिटीज जो है उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं और वो तब होती है कि जब हमारा जिस्म कोई इंसुलिन नहीं बनाता। तकरीबन 10% लोगों को इस किस्म की डायबिटीज होती है। बच्चे और जवानों में इसकी तशखीस ज्यादा होती है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को रोजाना इंसुलिन लगाना पड़ता है जो इंजेक्शन के जरिए या इंसुलिन पेन या पंप के जरिए दिया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, ना इसे रोका जा सकता है। इसे काबू में रखने के लिए मुतवासिन ग़िज़ा खानी पड़ती है, वर्जिश करना पड़ता है, ब्लड शुगर की जांच के साथ साथ रोजाना इंसुलिन इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। The second type of diabetes is pre-diabetes or borderline diabetes, as you may have been told. If your blood sugar levels are higher than normal but below the level to be diagnosed with diabetes, you may be told you have pre-diabetes. Although there is no cure for diabetes and the longer you have diabetes, the higher the risk for complications, pre-diabetes offers a warning. It gives you a chance to take action to prevent type 2 diabetes and stay healthy. If you have pre-diabetes, type 2 diabetes may be prevented or delayed through lifestyle choices such as eating healthy and exercising regularly. Pre-diabetes can be diagnosed by a healthcare professional with a routine blood test. अगर आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन डायबिटीज़ की तशखीस की सतह के नीचे है तो आपको प्री डायबिटीज़ है ये कहा जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है और जितने लंबे अरसे के लिए होती है उतनी पेचीदगियां बढ़ती हैं। तो प्री डायबिटीज़ का होना एक तरह से हमें मौका देता है कि हम डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए पूरी कोशिश करें, जिसके लिए मुतवासिन ग़िज़ा और रोज़ाना वर्जिश करना चाहिए। आपके डॉक्टर मामूल खून के टेस्ट से प्री डायबिटीज़ की तशख़ीस कर सकते हैं। Great. The other kind of diabetes is the type 2 diabetes, which is very common. It's the most common form of diabetes, and about 90% of people with diabetes have the type 2 diabetes. It's most commonly seen in adults, but there has been an increase in young people developing type 2 as well, especially amongst the indigenous population. And if you recall, the type 2 diabetes is caused when the body cannot make enough insulin and or cannot properly use the insulin it does make. So दूसरे किस्म की जो डायबिटीज है जिन्हें हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, ये सबसे आम किस्म की है। लगभग 90% लोगों में इस किस्म की डायबिटीज पाई जाती है। आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज बड़ों में पाई जाती है, लेकिन जवानों में भी इजाफा हुआ है और खास तौर पर इंडिजिनस लोगों में। अगर आप याद करें तो टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब जिस्म काफ़ी इंसुलिन नहीं बनाता या उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करता। फिलहाल टाइप 2 डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम मुतवासिन ग़िज़ा लेने से, रोज़ाना वर्जिश करने से और ब्लड शुगर को रोज़ाना चेक करने से और दवाइयाँ ठीक से लेने से इसको रोक सकते हैं और काबू में भी रख सकते हैं। So whilst currently there is no cure for type 2 diabetes, it may be prevented or delayed with healthy eating, exercise, as well as checking your blood glucose and taking your medications. So next type of diabetes is gestational diabetes. As gestational diabetes cannot be prevented, it is strongly recommended that all pregnant women be tested. It affects about 3.7% of all pregnancies. Risks associated with gestational diabetes include having a very large baby, which can be dangerous for both mom and baby during delivery, higher rates of cesarean delivery,
because baby is delivered via an incision made through a mother's abdomen and uterus, also known as C-section, and dangerously low blood glucose levels for the baby. It can be managed by making healthy food choices and sometimes with insulin. After pregnancy, a mother's blood glucose often returns to normal. Although a mother's blood glucose may return to normal after pregnancy, there are greater risks of later developing type 2 diabetes. प्रेगनेंसी में पाई गई डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं और चूंकि इसको हम रोक नहीं सकते, सभी हामिला खवातीनों को इसका टेस्ट करवाना चाहिए। तकरीबन 3.7% हामिला खवातीन इससे मुतासर होती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ मंसूब खतरात कुछ इस तरह हैं। बच्चे का वजन ज्यादा होना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है जिसमें बच्चे की ब्लड शुगर कम हो सकती है। इस किस्म की डायबिटीज को काबू में रखने के लिए मुतवासिन ग़िज़ा लेनी चाहिए और कभी कभार इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की ब्लड शुगर फिर से अक्सर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन मुस्तकबिल में माँ को डायबिटीज हो सकता है। So, Shabnam, we mentioned earlier that type 1 diabetes can't be prevented, but sometimes type 2 can be delayed or maybe prevented. What are some of the risk factors for type 2? So the risk factors for developing type 2 diabetes are age. If you are over 40, your risk is higher. If you have a first degree blood relative with type 2 diabetes, so that means your family history. So if your parent, brother or sister has diabetes, then your risk of getting diabetes is higher. If you belong to ethnic groups such as indigenous, Asian, South Asian, Hispanic or African, your risk is higher. And if you have had gestational diabetes, then it puts you at a higher risk. If you've given birth to a baby that weighs over 9 pounds or 4 kilos, if you've ever had polycystic ovarian disease, if you're not a very active person, there is a very strong link to type 2 diabetes for people who do not exercise. Being overweight is a strong risk factor for type 2 diabetes, especially where the weight is mostly around the stomach. You can lower your risk by making healthy food choices. And if you have any other risk factors such as high blood pressure or high cholesterol, then your risk for diabetes increases. So, किस्म 2 की डायबिटीज के लिए खतरे के अवामिल इस तरह हैं। अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो डायबिटीज का खतरा ज़्यादा है। अगर आपके माँ बाप, बहन को या भाई बहन को डायबिटीज है तो आपका खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका ताल्लुक इंडिजिनस, एशियन, साउथ एशियन, हिस्पैनिक या अफ्रीकन ग्रुप से है तो आपको खतरा ज़्यादा है। अगर कभी आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई हो तो आपका खतरा बढ़ जाता है। या आपने वजनदार बच्चे को जन्म दिया हो, जैसे कि जिसका वजन 9 पाउंड यानी कि 4 किलो से ज़्यादा हो। अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है तो भी आपका खतरा बढ़ जाता है। जो लोग वर्जिश नहीं करते उनमें खतरा बढ़ जाता है। So, what are some of the signs, Shabnam, that someone might have diabetes? What should we be watching for? So there are lots of signs, but sometimes some people may have no signs or symptoms, so it doesn't mean that they don't have diabetes. They still need to get checked. So the most common signs include the need to urinate often, unusual thirst, change in weight, feeling very tired, blurry vision. And with type 1 diabetes, these symptoms, they progress very quickly and can be dramatic. With type 2 diabetes, symptoms usually progress more slowly and may go unnoticed. Many people who don't know they have type 2 diabetes may not notice the symptoms at all. In fact, 1 out of 3 people that have diabetes don't know it. That's why regular testing for diabetes is important.
especially if you have any risk factors. Please remember that risks assessments and testing are different. So डायबिटीज के अलामात में शामिल है अक्सर पेशाब करने की ज़रूरत महसूस करना, हद से ज़्यादा प्यास लगना, वज़न में तब्दीली, थकान महसूस करना, आंखों से धुंधला नज़र आना। टाइप 1 डायबिटीज़ के अलामात तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के अलामात थोड़े कम तेज़ी से बढ़ते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी वाले बहुत लोगों को इसके अलामात महसूस नहीं होते। हकीकत में 3 में से 1 लोग जिनको डायबिटीज है उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज है, तो इसके लिए उनको डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। Testing for diabetes is a simple blood test that does not cost much. You should be tested every 3 years from age 40 onwards, and if you have other risk factors, get tested before age 40 or every year. Talk to your doctor about being tested for diabetes. तो डायबिटीज़ के जो टेस्ट है उसका खर्चा ज़्यादा नहीं है। 40 की उम्र के बाद हर 3 साल पर टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर आपको कोई भी अलामत है तो 40 की उम्र से पहले टेस्ट करवाएं और हर साल करवाएं। आपके डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। So, what are some of the complications that those living with diabetes may be at greater risk for, Shabnam? Diabetes is a serious disease and the physical impacts go beyond affecting the pancreas. For example, people with diabetes and high blood pressure have strokes twice as often as those with high blood pressure alone. They experience higher rates of adult blindness. Heart disease is 2 to 4 times more common in people with diabetes, and diabetes is the most common cause of kidney failure and amputation that is not the result of an accident. With proper diabetes management, these problems may be prevented or delayed. So डायबिटीज़ एक संगीन बीमारी है और इसके जिस्मानी असरात लुबालबा को ही मुतासिर नहीं करते बल्कि दूसरे असरात भी होते हैं। मिसाल के तौर पे जिन लोगों को डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनमें स्ट्रोक होने के इम्कानात दुगने होते हैं निस्बतन उनके जिनको सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अंधापन के भी इम्कानात ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ की बीमारी वालों में हार्ट की बीमारी 2 से 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। किडनी की बीमारी और पाँव को जख्म की वजह से काटना भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें आम होती है, लेकिन खुशखबरी ये है कि हम डायबिटीज़ को रोककर इन पेचीदगियों से बचा जा सकता है। So obviously we all want to avoid developing complications like that. And I think there's good news, isn't there, Shabnam? There are things that we can all do to minimize the likelihood that we'll develop type 2 diabetes or that we'll develop complications if we're living with any form of diabetes. What are some of those things? Absolutely, Kimberley. Let's talk about healthy food choices. Whether a person has diabetes or not, we all eat healthier when we follow Canada's food guide. The guide can help people to make healthy food choices and eating habits. This guide is now available in Urdu as well as Hindi and Gujarati. It is important to make it a habit to eat a variety of healthy foods each day. Have a plate that is diverse in its food types and which draws from each of the food groups: fruits, vegetables, protein foods, and whole grain foods. When making food choices, choose protein foods that come from plants more often. Choose foods with healthy fats instead of saturated fat. Healthy fats include olive, canola, soybean, sunflower oil. Saturated fats include processed meats like sausages and deli meats. Limit highly processed foods. If you choose these foods, eat them less often and in small amounts. Prepare meals and snacks using ingredients that have little to no added sodium, sugars, or fats. Choose healthier menu options when eating out. Make water your drink of choice. Replace sugary drinks with water.
use food labels, be aware that food marketing can influence your choices. चाहे किसी को डायबिटीज हो या ना हो, हम सब को कनाडा फूड गाइड के मुताबिक खाना चाहिए, जो हमें सेहतमंद खाने के इंतखाब और खाने की आदत बनाने में मदद करती है। रोजाना सेहतमंद खाने की आदत डालें। आपकी प्लेट में मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स का शुमार करें, जैसे कि फल, सब्जियां, प्रोटीन वाले फूड्स और अनाज। खाने के इंतखाब करने वक्त गोश्त के बजाय जमीन से उगने वाले प्रोटीन वाले खाने जैसे कि दालें और टोफू का इस्तेमाल करें। खाना बनाने में घी के बजाय ऑलिव ऑयल, कनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर के तेल का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा फ्राई किए गए या शक्कर और मैदे वाले खाने कम बनाएं। और बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने के वक्त पर भी सेहतमंद खानों का इंतखाब करें। पानी से अपनी प्यास बुझाएं, ना कि शक्कर वाले ड्रिंक्स से। खानों पर दिए हुए लेबल्स पर गौर करें और ध्यान रखें कि खानों के इश्तिहार से आपके इंतखाब पर असर पड़ सकता है। Those are really helpful tips, Shabnam. And now it's time to test our viewers' knowledge again and give you a bit of a minute to catch your breath. So we're going to do another true or false round. So true or false, eating healthily means that you can eat chocolate. And I know I'm relieved to know that the answer to that is true. Chocolate most certainly can be part of a healthy, balanced diet. The key thing is to be moderate in your consumption of it, and darker chocolate can be a healthy source of some other minerals and antioxidants. So think about that. Healthy food choices mean eating food with no flavor. And fortunately as well, that's false. Many, many healthy foods have delicious flavors, fruits and vegetables and grains and proteins. And so I think for me, a key is to eat a variety of those foods to really satisfy that desire for different tastes. Healthy eating means eating only fresh fruits and vegetables. And this is actually false. The thing about that is that fresh fruits and vegetables, when they're harvested, they have the kind of maximum amount of their nutrients, but when they're frozen or canned right at the point of harvest, they can retain those nutrients, in some cases almost better than fresh fruits and vegetables. And in these COVID times, they can be a particularly good source of that half of our plate of fruits and vegetables. So don't stay away from frozen or canned if that helps you get those vegetables into your diet. And then finally, true or false, unsweetened juice has sugar? And the answer is it does. It may not have added sugar or refined sugar, but it has a great deal of natural sugar. And those sugars can have a similar impact on our blood sugar that sugar that you might find in soda might. So it's best to minimize or moderate our consumption of juice, even if it's wholly natural fruit juice. Far better to have a whole piece of fruit instead. Shabnam, did you want to add anything or perhaps translate any of this for us? Basically, it's a common myth that if you're, do you want me to say it in Urdu? Yeah, sure. Okay. तो किम ने जो पहला सवाल पूछा उसमें उसने ये कहा कि क्या हम चॉकलेट खा सकते हैं कि नहीं। सेहतमंद खाने का मतलब ये है कि आप चॉकलेट नहीं खा सकते। क्या ये सही है या गलत? तो इसका जवाब गलत है। रोजाना वर्जिश को मामूल बनाकर आप हर तरह का खाना जरूरी एहतियात के साथ खा सकते हैं। दूसरा सवाल था कि सेहतमंद खाने के इंतखाब यानी वो खाने जिनमें कोई जायका नहीं होता। इसका आंसर भी गलत है, क्योंकि सेहतमंद ग़िज़ा में हर किस्म के जायकेदार खाने का शुमार है, जिसमें हर फूड ग्रुप शामिल है।
तीसरा सवाल था हेल्दी ईटिंग मीन्स ईटिंग ओनली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि सेहतमंद ग़िज़ा यानी कि सिर्फ ताज़े फल और सब्जियां खाने। ये भी आंसर गलत है, क्योंकि जो खाने फ्रीज किए गए हैं उनमें भी अच्छे ग़िज़ायात मौजूद है। चौथा था कि अनस्वीटेंड जूस में भी चीनी होती है। इसका जवाब सही है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पे शुगर है फ्रूट जूस में, और ज़्यादा जूस पीने से आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, क्योंकि आपके जिस्म को एडिड शुगर यानी कि जो शुगर हम मिलाते हैं और कुदरती तौर पे जो शुगर होती है उसके बीच में फ़र्क नहीं पता चलता, तो वो उस शुगर को बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस करेगा। इसलिए जूस, अगर आप घर में भी जूस निकालें, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे आपकी ब्लड शुगर ज़रूर बढ़ेगी। Kim, it's also important to note that healthy eating is more than the foods you eat. It is about where, when, and how you eat. Why and how you eat. So we should be mindful of our eating habits. Take time to eat. Notice when you're hungry and when you are full. Cook more often. Plan what you eat. Involve others in planning and preparing the meals. Enjoy your food. Culture and food traditions can be a part of healthy eating. Eat meals with others. And for more information on these and other recommendations, Canada's Food Guide is accessible online. Whether you have diabetes or not, we can all eat healthier when we follow Canada's Food Guide. Eating well with Canada's Food Guide can help you to make healthy food choices. It lists the number of servings you need to get all the nutrients your body needs to be healthy. So the Urdu translation is as follows. सेहतमंद खाने खाने के अलावा हमें इन बातों पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि हम कब, क्यों, कहाँ और कैसे खाते हैं। आपके खाने की आदतों पे तवज्जो दें। खाने के लिए वक्त निकालें। ध्यान करें कि आप कब भूखे हैं और कब नहीं। जब भूख लगे तभी ही खाएं। अपना खाना घर में बनाएं। आपको कुछ खाने हैं उसकी मनसूबा बंदी करें। आप जो कुछ खाते हैं उसकी मनसूबा बंदी करें। दूसरों को खाना बनाने की तैयारी और मनसूबा बंदी में शामिल करें। अपने खाने का लुत्फ उठाएं और हमारे रिवाज और खाने से के तौर तरीके भी सेहतमंद खाने का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरों के साथ मिलकर खाना चाहिए। और मज़ीद मालूमात के लिए कैनेडाज़ फूड गाइड ऑनलाइन दस्तयाब है, जो उर्दू, हिंदी और गुजराती में आपको मिल सकती है। और चाहे आपको डायबिटीज़ हो या ना हो, फूड गाइड की हिदायत पर अमल करने से हम सब सेहतमंद ग़िज़ा ले सकते हैं। और कनाडा फूड गाइड आपको बताती है कि आपको सेहतमंद रहने के लिए कितने मिकदार में ग़िज़ा लेने की ज़रूरत है। Those are excellent tips, Shabnam. And I would just also add for our viewers that on Diabetes Canada's website, we have a number of recipes that are both healthful and delicious. So if you're feeling in a rut or need some new ideas, do visit our website at diabetes.ca and check those out. Shabnam, we know that it's recommended that every Canadian get at least 150 minutes a week of moderate to vigorous physical activity for health. So talk to us about how we can incorporate healthy physical activity into our days. So almost everyone, whether or not they have diabetes or not, they can benefit from regular physical activity. So if you are just starting to be active, talk to your healthcare professional about how to get started. And it is best to avoid prolonged sitting. Try to interrupt sitting time by getting up briefly every 20 to 30 minutes. So the goal should be to add about 150 to 300 minutes of exercise every week. That's a little over 20 minutes per day. Add in some weightlifting exercises a couple of times a week.
try lifting soup cans or heavy books whilst you watch TV. So some exercise ideas can include walking, running, hiking, swimming, joining a sports team, and other ways to remain active. Other tips can include park your car further from the store when you go shopping, take the stairs when you can, walk the dog, play actively with your kids, and turn off the TV, computer, or video games. Begin with walking and always remember to start slow and build up because small changes make a big difference. So वर्जिश करना रोज़ाना तौर पे बहुत ही फ़ायदेमंद है और सभी को वर्जिश करना चाहिए। वर्जिश शुरू करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें क्योंकि अगर आपको कोई बैक प्रॉब्लम है या कोई भी जात की बीमारी है तो डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। ज़्यादा देर बैठने से एहतियात करें, हर 20 से 30 मिनट पर उठें। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट वर्जिश करें और हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा वज़न उठाकर वर्जिश करने जैसे वज़नी किताब या सूप के कैंस इस्तेमाल करने से आप इस्तेमाल करें वज़न के लिए। पहले थोड़े से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। छोटी छोटी तब्दीलियों से भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग जाते हैं तो गाड़ी को स्टोर से थोड़ा दूर पार्क करें ताकि इस तरह आपको थोड़ी चलने से थोड़ी एक्सरसाइज मिलेगी। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें जब भी हो सके, बच्चों के साथ खेलें और टीवी कम देखें और वीडियो गेम्स का कम इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा देर बैठे ना रहें और टहलना शुरू करें। Excellent advice, Shabnam. So now, if I may, I'd like to just take a couple of minutes to share with our viewers how Diabetes Canada can help them in some of these efforts. And maybe I'll ask Shabnam if you wouldn't mind repeating me in Urdu once I'm finished. So Diabetes Canada funds a significant amount of research to help look into ways to prevent, manage, and cure diabetes. We also do a lot of advocacy and make recommendations to all governments that help to ensure that diabetes is a priority for governments, and also that those of us affected by diabetes have access to the care, the medications, the devices that we need to live well, and that our rights are being well respected, whether it's in the workplace or what have you. Diabetes Canada is also the professional association of healthcare providers who care for people with diabetes. And so we support those healthcare professionals by publishing clinical practice guidelines and offering them the latest information about diabetes and how best to care for us, which helps to make sure that we're all well looked after. We provide a lot of information through our website, diabetes.ca. And if any of our viewers have questions, whether it's about general information about diabetes, whether it's information about your own personal health, or whether it's questions about how you can access government programs that might help you bear the costs of living with diabetes, please contact us at 1-800-BANTING, as in Dr. Frederick Banting. तो डायबिटीज़ कनाडा डायबिटीज़ की रोकथाम की रिसर्च के लिए पैसा खर्च करती है और गवर्नमेंट को डायबिटीज़ के मुद्दे को अहम बनाने के लिए मशवरा देती है। इसके साथ साथ वो हेल्थ के प्रोफेशनल्स को इस शोबे में नई मालूमात फराहम करती है कनेडियन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के ज़रिए, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मालूमात के लिए वो वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज करती है। और जब आपकी तरह जो पेशेंट्स हैं उन्हें कोई भी मालूमात चाहिए तो ये सारी चीज़ें उनकी वेबसाइट से फराहम कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवालात हो डायबिटीज़ के मुतालिक तो 1-800-BANTING को कॉल करें और वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपके सवालों का जवाब 24 घंटे में देंगे।
So please just remember that we are here for you. We are offering during this pandemic period an unprecedented number of webinars like this one to help keep you informed and to keep you up to date, whether it's with the latest information regarding COVID-19 or just diabetes in general. So visit our website or our YouTube channel to access all those recordings. You can connect with us online at diabetes.ca. We have a website there that's resources on COVID-19, and then we have countless other informational resources on our website. So do take a browse around and then call us at 1-800-BANTING at any time. Shabnam, I'll ask that you translate that if you wouldn't mind. तो इस पैंडेमिक के दौरान डायबिटीज कनाडा ने काफ़ी मालूमाती वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं कोविड और डायबिटीज के बारे में। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फराहम हो सकती है वहाँ से। और अगर आपको रेसिपीज चाहिए तो वो भी आपको डायबिटीज की वेबसाइट से मिल सकती हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और सर्विसेज है उसके बारे में भी मालूमात आपको उनकी वेबसाइट से फराहम हो सकती है। और उनकी हेल्पलाइन जो है 1-800-BANTING वो मंडे टू फ्राइडे सुबह 7:30 से शाम 6:30 बजे तक खुली होती है। तो उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कुछ सवालात हो तो आप उनको पूछ सकते हैं। Over to you, Kim. Well, thank you, Shabnam. That brings us to the end of our webinar. So I really want to thank our viewers for joining us today, and more importantly, to thank Shabnam Jabrani for all of your excellent advice and sharing your expertise with us today. Thank you so much. And please, to our viewers, don't hesitate to reach out. And in the meantime, be well.